the belief in anima or spirits, anima or spirits, belief in anima or spirits. It holds that world is driven by spirits. It holds that world is driven by spirits. Animism refers to a given form of religion in which सर बहुत कमाने लग गए अब तो आज। यार मेरे यहाँ तो फुल है कोमल, और किसी को भी आवाज का कोई इश्यू है? आंचल जी, ब्रिजबाला जी, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? कोमल जी, आप ही की साइड से कोई इश्यू है? क्योंकि ब्रिजबाला जी और आंचल को ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप इंटरनेट को देखो। कोमल जी, सर मैंने आवाज भी फुल कर रखी है और कोई इंटरनेट इशू भी नहीं है। फिर तो आवाज आनी चाहिए। मुझे आ रही है, आपको भी आनी चाहिए। माइक्रोफोन लगाओ, ब्लूटूथ लगा के सुनो, कुछ और वो ईयरबड्स लगाओ। ओके सर। ईयरफोन है आपके पास? यस सर। ईयरफोन लगा के सुनिए। So animism refers to a given form of religion in which man finds, man का मतलब man woman दोनों ही हैं, in which man finds the presence of spirit in objects, यानी कि चारों तरफ हमारे कुछ है, स्पिरिट है, कोई कोई शक्ति है, in objects or motions that surrounds him, यानी हमारे चारों तरफ कुछ भी ऐसा है, समझे? So animism is considered one of the most primitive ideas. It is considered one of the most primitive ideas that gave birth to religion in society.
It is related with primitive people. It is related with primitive people. You know, spirit. हम कहते हैं आत्मा, ऊपर की हवा है। सुना है आपने एक शब्द या नहीं सुना किसी ने? न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे, उसमें भूत आ गया, चुड़ैल आ गई, ये हो गया, वो हो गया. These are all ideas of spirits. Spirits are seen. Spirits are seen both benign. कैसे लिखते हैं benign हम? benign यानी जो कोई नुकसान ना करे, और malevolent. ठीक है जी, benign and malevolent. For example, many cultures in Northeast by tribal groups practice an animistic religion. Practice animistic religions in which different ways are seen. Different ways, जैसे dance, using masks, chanting, rituals and ceremonies. Similarly is an example of Teton Sioux of America. Teton Sioux of America, where they also practice an animistic religion in which spirits plays negative roles in their lives. Therefore witchcraft, झाड़ा कहते हैं ना, झाड़ा लगवाने गए थे, झाड़ा है, ये है, and sorcery, जादू, are part of animistic religion. Similar thing is proved by Pritchard. In his study of the Nuer of South Sudan.
नुइर ऑफ साउथ सूडान, ये एक ट्राइबल ग्रुप है, कम्युनिटी है, तो उसका एग्जाम्पल, as they are also having an elaborate theological idea of religion, theological idea of religion centered on sky spirit or high god. In the paragraph, humans have faced enormous challenges since ancient times. Enormous challenges since ancient times. Therefore, happiness is also linked with happiness of dead relatives and ancestors. तो आप कुछ मुझे ऐसा बता सकते हैं जिससे हम बताएं कि हमारी सोसाइटी में हैप्पीनेस ऑफ हमारी हैप्पीनेस जो है इट डिपेंड्स अपॉन द हैप्पीनेस ऑफ एंसेस्टर्स एंड आवर डेड रिलेटिव्स। आपको ऐसा कुछ एग्जांपल पता है? कोमल जी, एक एग्जांपल बताइए जिससे हम ये प्रूव कर सकें। बोलो कोमल। सर जैसे वो श्राद्ध होते हैं। और बोलो, वो तो आंचल ने बताया, और बोलो। हाँ, बरसी। और सर जैसे कुल देवता होते हैं जो, वेरी गुड, उनको भी हम पूजते हैं, उनकी भी मान्यता है, बिल्कुल। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे यहाँ, पितृ एंड श्राद्ध। यस सर। फिर पितृ, हाँ सही बात है ब्रिजवाला जी। तो हिंदुइज्म में होता है, ये हिंदू रिलीजन में है, पितृ एंड श्राद्ध, in which rituals and prayers are done. Rituals and prayers are done to placate the souls of their ancestors. To placate the souls of their ancestors and to demand peace and happiness in their lives. Peace and happiness in their lives. Similarly is the concept of
transmigration of soul. Similarly, is the concept of transmigration of soul. E.B. Taylor, in his book Primitive Culture, developed the thesis of animism. And he also developed distinction between magic, religion, and science. According to him, any type of spiritual phenomena, which also include souls and divinities, which is animated and interpreted by men, they are explaining the stage of animism. The origin of such ideas goes back to dreams. Where a person encountered their double, who is more superior in terms of quality and power. And he also devised the concept of soul in human body, which is responsible for elasticity of images in dreams. As a concept, full stop के बाद, as a concept, which is क्या कोमल, क्या बोला मैंने? ब्रिजबाला जी रिपीट कीजिए। आज आप कहाँ हैं?
Oh my God, prisoner duty. Still you are studying. Amazing. Oh, you are not writing, but you are just understanding and listening. So it is responsible for elasticity and images. हाँ, ये मैंने बोला, ऐसा बोला क्या? कुछ और ही बोला होगा, मैं खुद भी याद नहीं मुझे. That soul बोला होगा मैंने. That soul is responsible for the elasticity of images in dreams. Soul is responsible for elasticity of images in dreams. है ना? Soul is responsible for elasticity of images in dreams. It also believes that when you are sleeping, soul temporarily gets out of body. And after death, it moves out of body permanently. This concept is also linked with everything which is subjected to birth, growth, and decay. Which is subjected to birth, growth, and decay, and even expansion. Where soul is supposed to be present. Men started worshipping these embodiments. यानी इंसान ने इनकी पूजा करनी शुरू कर दी. And thereby animism as a specific form of religion came into being. Therefore, Taylor argues that religion in the form of animism originated to satisfy man's intellectual nature.
to meet his need. To meet his need to make sense of death, dreams and vision. That is why, as per interpretation of Taylor and Spencer, टेलर, हमने टेलर के बारे में तो बोल ही दिया है, and similarly by Spencer, animism theory is also called ancestor worship theory. हाँ, ancestor theory, animism theory is also known as ancestor worship theory. ठीक है? ठीक है जी, इसमें कोई डाउट आपको एनिमिज्म में? बोलिए, जल्दी बोलिए। इसको एक बार दोबारा पढ़िए पूरे को 1 मिनट के अंदर और पूछिए। आवाज में इशू हो रहा है। हाँ कोमल जी, आवाज में बहुत ज्यादा क्या है इशू हो मेरे रहा को? है। आपकी आवाज जैसे पहले आती थी, मुझे ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं होती थी, मैं ऐसे क्लास ले लेती थी। अब मैंने वो भी लगा रखे, तब भी मुझे बिल्कुल ध्यान से सुनना पड़ रहा है। तो यार अब मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है, हमारा सिस्टम तो वही है जो था शुरू से। बाकी लोगों को भी ऐसा कुछ है आंचल? आज ब्रिजबाला जी, इट्स क्लियर, सी? लैपटॉप में ठीक आ रही है, कह रही है वो, देखो। तो सर मेरी तरफ से कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो सुन रहा है। ये हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सकता है उतना बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। नेटवर्क इश्यू होगा कोमल। So monism is a belief, in single attribute. Is a belief in single attribute, God or religious idea. Single attribute, God or religious idea. Because it is centered. It is centered on the belief of oneness. Oneness. एकता, oneness of all existences, or in a single God.
or in a single God ideology. For example, Islam. Islam is a monistic religion. एकेश्वरवाद. मोनिस्टिक रिलीजन मतलब एकेश्वरवाद. Similarly is the concept of Advait philosophy of Hinduism. Advait philosophy of Hinduism, which also believes in unity of being. Unity of being. Similarly in Sufism, Sufism, there is focus upon concept of single powerful universal being. Single powerful universal being. It is believed, it is considered, I should say, it is considered that monistic beliefs are the basis of, are the symbols of, or the basis of a nascent religion. Nascent यानी शुरुआत हुई है जिसकी, आरंभ, नया नया हुआ है, नया नया जब पल्लवित होता है कुछ, उसको हम नेसेंट बोलते हैं. And with time, different cults and sects emerge, leading to pluralistic religion. In contrast of this, is E.B. Taylor's evolutionary theory.
हमने अभी पढ़ी थी। in which it is contended that monotheistic religions are hallmark of modern societies. Monotheistic religions are hallmarks of modern societies, and pluralistic religions are hallmark of primitive societies. Change the paragraph. Pluralistic religious practices, pluralistic religious practices, they accommodate different viewpoints. Thoughts, and ideologies. It is also impacted by existence of freedom of religion. Fertility of ideas. Mutual tolerance. कितना आपके अंदर सहिष्णुता है. ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं. The idea of freedom of religion. The idea of freedom of religion is facilitated when people of a region, they are free to choose and worship including public expression. Of their religious beliefs. Without any fear or favor.
within a religion also, there can be different philosophies and ideologies. For example, in Hinduism, there is Dvaitwad, Advaitwad, Shuddha Advaitwad, and so on. Similar is the example of Christianity. Where Protestants, Catholic, Calvinism, Methodists, they all thrive together. So religious pluralism is a belief. Religious pluralism is a belief that one can overcome religious differences. One can overcome religious differences between different religions and denominational conflicts within the same religion. For example, in India, religious pluralism have always existed since ancient times. Religious pluralism have always existed since ancient times. And even establishment of
even establishment of ज़oroastrianism। सुना है आपने ज़oroastrianism किसी ने? बताइए। यस सर। शाबाश। बताओ कोमल इसके बारे में। सर ये फायर वर्शिप वाले होते हैं। वेरी गुड, दे बिलीव इन फायर वर्शिप। बहुत सही। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? ज़ोरास्ट्रियन। हम्म, क्या बोला आपने? क्या बोला आपने? सर ज़ोरास्ट्रियन सुना है मैंने। हाँ, ज़ोरास्ट्रियनिज्म ही है तो। और भी तो इसका एक इंडियन नेम भी तो हो सकता है, इसका एक हिंदी नाम भी तो हो सकता है। बता दो, जल्दी बताओ। क्या सर? और कोई नाम भी तो हो सकता है इसका, और कौन बताएगा? ब्रिजवाला जी, आंचल जी। हम्म, वेरी गुड आंचल। पारसी, समझे? पारसी भी इन्हीं को कहते हैं। कोमल। यस सर। हाँ, अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर हम बात करें तो सेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्ट्स एंड कल्ट्स। सेक्ट्स एंड कल्ट। We can write they are the two forms of religious organization. Two forms of religious organization, and they represent religious revivalism. They represent religious revivalism on one hand, and search for alternative religious activities on the other side. They also reflect that existing dominant religions are not inspiring enough. Existing dominating religions are not inspiring enough. Therefore, new alternatives are formed. New alternatives are formed. So, from an evolutionary perspective,
from an evolutionary perspective, cult, sect, denomination, and institutional religions. They are seen along a continuum. They are seen along a continuum. समझ आ रहा है? कोई सवाल? कोमल, आंचल, ब्रिजबाला जी? ब्रिजबाला जी आप ध्यान से सुनिए, पूछिएगा फिर। सूफिज्म और इस्लाम भी मैं बता दूंगा अभी। आंचल? बोलो आंचल। So what I said, evolutionary, from the evolutionary perspective, cult है, sect है, denomination, institutional religion जैसे church है, they are seen along a continuum, but they differ from each other. They differ from each other in the terms of degree. They differ from each other in terms of degree. To which they are established, and conventional. Cult is neither well established. Cult or even conventional in nature. That is why in sociology, for cults and sects, a new term, that is new religious movement. New religious movement is used. That is new religious movement is used. Change the paragraph. In sociology, church sect typology, church sect typology.
हाँ कह सकते हैं ब्रिजवाला जी। बिल्कुल सही बात है, सही सोच रहे हैं आप लोग। चर्च सेक्ट टाइपोलॉजी इज ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय Weber and Troeltsch. Weber and Troeltsch. They say that they say that church is a well-established religious institution. Church is a well-established religious institution which is bureaucratic in its working. And it is culmination of evolution from sect. It is culmination of evolution from sect. On the other hand, sect is smaller in size. Sect is smaller in size. It is closed. It is closed and is having a different agenda. Than the dominant religion. Than the dominant religion. Howard Becker. Howard Becker has further added denomination and cult to the church sect typology of Weber and Troeltsch. Change the paragraph. Among various reasons for the rise of sects and cult, that is, you can say new religious movements, सोचो। One argument is that they are the result of secularization and
Liberalization of society with time. Secularization and liberalization with time. They are also seen as an alternative. They are also seen as an alternative to the rigid ritualistic and orthodox. Rigid, ritualistic and orthodox mainstream religion. According to Brian Wilson, in his book Religion in Sociological Perspective, they are a result of rapid change, rapid social change. With people looking for explanations and resurrections. ठीक है जी, हाँ it is also argued that new religious movements appeal to such people who feel alienated and marginalized from the society. In the paragraph, cult. Cult, what is cult? So cult is a small group of religious activities. Small group of religious activities having beliefs different from the dominant religion with individualistic focus, and individual experiences. They are based on
charismatic leadership. They are based on charismatic leadership. ठीक है जी. Having no concept of membership, or rigid rules and regulations. And they may even retain affiliations to other religions. Affiliations to other religions. Their origin is seen in terms of social evils. हाँ बिल्कुल सही बात है मैडम. सिखिज्म नहीं कह सकते, हम बात करेंगे, पहले एक बार जरा कर लें. मतलब है कैरिस्मेटिक, बट वी विल टॉक अबाउट इट. क्या वो कल्ट है, क्या वो क्या है, हम बात करेंगे. पहले जरा कॉन्सेप्ट लिख लें. Some sociology thinks that their origin is in terms of social evils, discontentment, and change in society. They also provide alternative to the people therefore accepted by marginalized sections of society. So cult is a voluntary organization open to all, but it is possible that it may be
it may be secretive. It is possible it may be secretive. Then it will be highly exclusive. Possible and क्या बोला मैंने? But if it is secretive, it tends to be, that is possible. if it is secretive, then it will tend to be highly exclusive. या तो सबके लिए होगी, या फिर अगर कोई कोई हो सकता है तो फिर वही बात है कि आपके हाथ पे वो बंधा होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, आप वैसे होने चाहिए, तभी बन पाओगे उसके मेंबर, नहीं तो नहीं बन सकते. And there is one, there is doctrine, there is a doctrine which will focus on God, which will focus on God or goodness with certain definite characteristics. With certain definite characteristics. And they generally flourish in metropolitan and urban centers. They generally flourish in metropolitan and urban centers where culturally heterogeneous populations are thrown together, and they widely feel the impact of rapid social change. They widely feel the impact of rapid social change. आई एम श्योर ब्रिजबाला जी ने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे ड्यूरिंग हर ड्यूटी टाइम्स, ड्यूरिंग हर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट पोस्टिंग्स में. बहुत सारे केसेस पड़े होंगे पुलिस स्टेशन में जब वो पोस्टेड रही हैं. एम आई राइट ब्रिजबाला जी? तो अभी जैसे ही ब्रिजबाला जी के पास टाइम होगा तो वो हमसे बात करेंगी और अपने एक्सपीरियंसेस को बताएंगी. आज नहीं, प्रॉब्ली देखते हैं ऐसा पॉसिबल हो पाएगा ब्रिजबाला जी? लेट्स सी. अरे बाप रे, कंफर्म तो कर दो. हाँ क्यों ब्रिजबाला जी, कभी तो कंफर्म हो सकता है. अच्छा, जिस दिन आपकी छुट्टी हो हम आपके लिए स्पेशल एक सेशन कर देंगे, तब तो कर दोगे? थैंक यू वेरी मच माय डियर. तो एस्टैब्लिश रिलीजन में क्या होगा? हर चीज ब्यूरोक्रेटाइज्ड होगी, हर चीज इम्पर्सनल होगी, हर चीज एकदम सिस्टमेटिक हो सकती है. लेकिन वही हो सकता है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे माइंड में एक एग्जांपल है. जैसे इस्कॉन, इस्कॉन इस्कॉन सुना है आपने? इस्कॉन का नाम सबने? Yes, sir. हाँ, इस्कॉन इज एन कल्ट. इस्कॉन इज अ कल्ट within the established religion of Hinduism. Within the established religion of Hinduism. So इंडिया में कल्ट नहीं बोलेंगे आप, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में कल्ट बोलोगे उसको आप. कृष्णा कॉन्शियसनेस का कल्ट. यहाँ लेकिन रिलीजन है. तो ये रिलीजन, एक जगह रिलीजन बहुत डोमिनेंट हो सकता है, दूसरी जगह वो कल्ट भी हो सकता है. According to Aldridge, according to Aldridge,
Cults are present in modern society because religion guarantees oh, because religion guarantees salvation. Religion guarantees salvation after life, whereas cult provides relief in this lifetime only. And cult is also helping in solving problems of everyday life. It also promotes vernacular languages. It also promotes vernacular languages. And easy medium for communication with God. Easy medium for communication with God. क्यों जी? ये तो आप मानते हो, कीर्तन, सत्संग, भजन. Devotees, devotees have interpersonal relationship with each other. Devotees have interpersonal relationship with each other. Interpersonal relationships with each other. क्यों जी? मानते हो आप लोग? आप लोगों में से कोई ऐसा फॉलो करता है या घर में कुछ ऐसा होता है? हाँ, बोलिए. Yes, sir. अच्छा, फॉलो नहीं करते आप, लेकिन कुछ ऐसा होता है कोमल जी? हाँ सर, घर पे करते हैं सर। हलवा बनता है रोज, हलवा. हाँ कोमल, क्या सर? हलवा बनता है, मैंने कहा यस सर। हलवा बनता है. सही है यार. नाम ले लेते हैं ना लोग, नाम धारण कर लेते हैं. क्यों? आई लाइक कल्चर ऑफ लड्डू गोपाल. ओके. हाँ, तो आपके यहाँ तो वैसे भी होता है, कीपिंग भोग. तो ये सारी बात आपके सोचने के ऊपर है. आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगी. यस, ये सारी चीजें हो रही है हमारे यहाँ बहुत कुछ है ऐसा. पीटर बर्जर
पीटर बर्जर ने क्या किया? पीटर बर्जर classified Peter Berger classified cults into three types. Three types: revivalists, who glorify who glorify their forgotten past. Who glorify their forgotten past. Similarly is Adventists. Adventists. Similarly is Adventists. Who believe in imminent second coming of the Christ. आने वाला है, अभी आ जाएगा, अब आएगा, जीसस क्राइस्ट आएगा, वही देश को, वही पूरे विश्व को बचाएगा, वही सब अच्छा करेगा. ओके. और तीसरे क्या है? ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट जैसे हमारे यहाँ है ओरिएंटलिज्म, बहुत सारे हैं ऐसे ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट which are linked with philosophies and ideas in India. According to Wallace, in his book Elementary Form of New Religious Life, Elementary Forms of New Religious Life,
classification of new religious movements is into वर्ल्ड अफर्मिंग जो है मानो, उसी के साथ साथ बढ़ो, अफर्म करो, फेथ करो, बिलीव करो, आगे बढ़ो। वर्ल्ड अफर्मिंग। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज वर्ल्ड अकोमोडेटिंग। गड़बड़ है, क्या करें, दिक्कत है, लेकिन अकोमोडेट करते हैं। और तीसरा वर्ल्ड रिजेक्टिंग। वर्ल्ड रिजेक्टिंग यानी खराब है, सब खत्म है, और वो क्या हो गया, वर्ल्ड रिजेक्टिंग। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई सवाल तो पूछिए प्लीज। बोलिए। तो ये तीन चीजें हो गई। अब चेंज द पैराग्राफ। सेक्ट्स आर मोर ऑर्गेनाइज्ड देन रिलीजन। Sects are more organized than religion, more organized than cults, sorry. More organized than cults. Because there is institutionalization of social roles. सेक्ट में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है, ये आएगा, इतने बजे होगा, ऐसे होगा, ऐसे चेयर डलेंगी, ऐसे बैठोगे, राधा स्वामी, सत्संग व्यास, सेक्ट है वो, कल्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सोशल रूल्स, SATIO, Z नहीं, SATIO, गलत लिख दिया। They have a membership. They have a membership, and they have desire to disassociate from the existing social order. Desire to disassociate from the existing social order having definite and clear process of initiation. Having strong loyalty of its members. Drinking of holy water. पानी पियो, नाम लो, धागा बांधो, नाम सुमरन करो,
तो वही हमने बोला कि सेक्ट में क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, सेक्ट में डिफाइंड होगा, सेक्ट के अंदर मेंबरशिप होगी, सेक्ट के अंदर एक सिस्टम होगा, सेक्ट ज्यादा ब्रॉड रिलीजन से अलग होगा, सिस्टमेटिक अप्रोच होगी, एक प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन होगा। कल्ट में कैरिस्मेटिक लीडर होगा, उसी के फॉलोअर होंगे, वॉलेटाइल होगा नेचर में, स्टेबल जरूरी नहीं है होगा, ओपन रहेगा, कोई कंडीशंस नहीं रहेंगी, ठीक है। जबकि सेक्ट के अंदर क्लोज्ड मेंबरशिप है, जैसे फॉर एग्जांपल ओशो का कल्ट, ओशो का कल्ट, या जैसे होता है एक और ट्रांसडेंशियल मेडिटेशन, क्या प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक चर्च सेक्ट हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस सेक्ट हैं, कल्ट नहीं है। ट्रांसडेंशियल मेडिटेशन आपने सुना है किसी ने, कोई प्रैक्टिस करता है? हाँ ब्रिजवाला जी, आपकी जॉब तो बड़ी हेक्टिक है यार। बताइए ब्रिजवाला जी। हाँ मेडिटेशन करते हो आप? टाइम ही कहाँ है मेडिटेशन का, आप यही बोलोगे। अच्छा आप मेडिटेशन करते हो? आंचल जी आप भी करते हो? हाँ चलिए बात करेंगे आप लोगों से फिर। 10 minutes? ओ प्लीज टेल मी हाउ टू डू इट। तो ये हो गया सेक्ट और कल्ट। अब आ जाते हैं हम डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन, तो डिनोमिनेशन इज ए सेक्ट। डिनोमिनेशन क्या है? वो सेक्ट है। which has cooled down, which has cooled down and became an institutionalized body, became an institutionalized body rather than an active protest group, rather than an active protest group. Rather than an active protest group. So it is a religious sect. It is a religious sect which has lost its revivalist and reformist dynamism. Which has lost its revivalist and reformist dynamism, and having a larger following than sects and commands. Larger following than sects and command. और क्या बोलेंगे हम? So denomination is more closer to the church.
more closer to church, and it is acceptable to church more than a sect. Therefore, Johnson says that this division and denomination हम बात करेंगे ब्रिजबाला जी की शंकराचार्य रिवाइवलिस्ट है भी कि नहीं है completely. Therefore, Johnson says that division is always not clear. Division is always not clear. Therefore, domination comes into picture when a sect becomes respectable. When a sect becomes respectable in the eyes of middle class society. When a sect becomes respectable in the eyes of middle class society. जैसे स्वामी विवेकानंद के हैं, रामकृष्ण मिशन है, वो सेक्ट है. Respectable in the eyes of middle class society and relaxes its religious vigor. Relaxes its religious vigor. And it is having membership from all level of society. All sections of society, and they also accept norms and values of society. तो अगर हम कहेंगे रामकृष्ण परमहंस शुरू में सेक्ट था, तो धीरे धीरे क्या बन गया? डिनोमिनेशन बन गया. There are very minor restrictions. And it is also having a hierarchy of officials. Having hierarchy of officials. Hierarchy of paid officials. Paid. Hierarchy of paid officials, much like a church. So you have sect. Sect is becoming denomination, and denomination can become a church. Basically, denomination can become a church, which is the final stage. Which is the final stage, because here church is going to accept the norms and values of society. Church is going to accept norms and values of society, and it is regarding itself as a guardian of the established social order. It is regarding itself guardian of established social order. Therefore, it controls monopoly and
its own version of truth. Its own version of truth. आंचल जी, ब्रिजबाला जी, कोमल जी, कोई डाउट है तो बताइए।